how many are working and how many looking for some great opportunities in the field of network and security? Anyone? So that we will come to know what is exact your requirement. Yeah, Anand, please go ahead. You can unmute yourself. Yeah, I'm looking for the opportunity to work in networking. Okay. Anyone else? I would like this session to be a two-way. I don't want that I will speak and you will listen. That should not happen because that will be complete waste of time. Okay. There should be some kind of fruitful of this session. So it should be a two-way. Any other who is working or fresher, just college pass out, want to know more about this? Yeah, I am currently working. Okay. Neeraj, how many experience? What is the experience you have? I have about 5 6 years experience Okay. And currently where you are working? working with Okay. Insight Enterprises. Yeah. Okay. Great. Anyone else? Okay. How many of you are not working in the field of network and security, but still want to have the career here? Anyone? I believe we have the mixed crowd. Some might be freshers, some might be experienced, some might be looking for some in more depth. Okay, let me ask any of you. Ashish, how about you? Okay. Uh, British, I don't see any option for chat here. Hello. Yeah. Yeah, normally we have the option of chat message, but I don't see here. If anyone wants to have some kind of chat message, we can have that also. Chat message. We'll see. Anyone can message. We'll see here. Yeah. She's saying something. Yeah, Ashish, you can Hello. unmute. Yeah, Ashish, go ahead. Yeah, yeah. Yeah, I am working in Reliance Jio. I have 13 plus year experience. 6 year experience in IT networking in SCL and SCL, and Okay. 6.5 years experience in Reliance Jio. Right now I'm in telecom field, but previously I'm working as IT networking. So want to move again in IT networking. So that's why I Okay. So, try to. okay, you are a good example. So let me brief me about yours myself. I have to more than 15 years of experience in the IT field. Okay, I've worked in many companies, Wipro, SunGard, and so many companies. Currently, I'm also working in one of the MNCs, but I can't disclose that part. Okay, it's quite confidential. So whatever the experience I'm having last 15 years, okay, how I started my career, how I struggled in my career, how I raised in my career, currently where I'm standing. Okay, I have good experience I will share with you so that it will be clear path, clear vision for you, what to choose, and how to follow. Just don't blindly enter the field of networking कि मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने कर लिया, चलो मैं भी कर लेता, मुझे कुछ पता नहीं है. Don't go any way of like that. Okay. So I think Brijesh, we can start. We have 12 people. Let's start. Yes. Yes. You can start. Meanwhile, the Yeah, candidate will join. Yeah. I Session will is recorded. I will share my screen. Okay. Let me know if it's visible. Is it visible? Right. Yes, sir. Okay. Hope my voice is clear. There is no disturbance or surrounding noise. Okay. No, sir. So first thing, when you opt for a network or the security engineer, okay, just want to brief you that when I started my career 15 years back, you must have about
heard about the course CCNA? Okay, have you anyone? If you are experienced, come on, guys. Anyone? I have done CCNA in 2008. Okay, Then same here. Yeah, same here. So, what is the drastic change now? 8 to 10 years back, when you just do a CCNA, so CCNA what covers? It covers the routing and switching. Okay, fundamentals of a network. So in those days, when you apply for the network, it was very easy to get a job if you are CCNA certified, because you just required to know the routing and the switching part. The network was not so much complicated at that time as we hear now. Okay, so if you are working for a network engineer, or if you are already working as a network engineer, you might be knowing what is the job profile. Those who are not working, okay, how they can approach this course. What are the current requirements? Is only routing switching sufficient, or you also need a security part? What are the technologies that currently involved in a data center? Anyone of you have worked in the data center, real data center? Anyone? Okay, I'm not seeing the chat, so you can just speak out. Yeah, I work in data center. Okay, so what technologies, what vendors, or what platform you have looked and worked on? I have worked on Nexus, all models, 7000, fiber extenders, 6509, Cisco. So you have worked on the routing part, okay, routing Yeah, and switching part. How about yeah, the firewalls? firewalls. I have worked with Palo Alto 5220, VM series, VM300, VM200, Okay, 3220s, Panorama, and Cisco ASA, okay. Cisco So you seems to be FNC. have good amount of experience, right? Good to know that. So for others who don't know the responsibilities of a network and a security engineer, okay, when you even apply, okay, I would just like to show you what is the current requirement. Okay, we will come to all this. If you look at some of the requirements, job requirements. Okay, now see, this is a company called Randstad. And what is the requirement? Okay, this is the company, for instance, the requirement is for Palo Alto. What is the requirement? Hands-on experience, Palo Alto, checkpoint firewalls, network security, Cisco, trust, cloud security, endpoint security, God knows what are these things. For a fresher, okay, especially for a fresher who don't know how to proceed in the career with network and security. Next, we have persistence. It is a network architect. See the requirement. Everywhere you will find that routing, switching, firewall, load balancer, some part of automation, some part of cloud is a mandatory. Look at this, Capgemini, the highlighted portion. Everyone requires routing, switching, firewall, load balancers, automations, that too different platform. Infosys. So what is the main purpose of this webinar for the career guidance? Okay, and what are the roles and responsibility? How can we approach if you want to make a career in networking field? Okay, so if you go through the some of the points, configure and install various network devices and services. It's a very general statement. Configure and install. Okay, the first thing is that if you talk about the network devices, what are the vendors present in market? Most of you might have about the Cisco. Okay, who is the main competitor for Cisco? Anyone? कोई बता सकता है सिस्को का मेन कॉम्पिटिटर कौन है? Come on, guys, speak up. If Juniper. anyone, Juniper, right? Okay. Now there is a new competitor. If I just go on this slide, vendors and products. Cisco is the giant. Cisco has the majority of the market. लेकिन problem क्या है Cisco में? Cisco is a little bit costly.
अगर आप एक डिवाइस खरीदते हो सिस्को का तो उसमें आप जूनिपर के अरिस्टा के 2 या 3 डिवाइस खरीद सकते हो. Every company wants cost cutting. No doubt that Cisco is the best, the product is the best, service is the best, support is the best, but cost is also very high. So when you work as a network engineer or when you get appointed as a network engineer, the first challenge क्या होता है? मेरे साथ भी हुआ है. I did CCNA. I went as a Cisco engineer, and when I worked there, I saw complete network devices with Arista. I saw as a Dell. I saw as a HP. I asked manager कि भाई मैं तो सिस्को करके आया हूँ लेकिन यहाँ पे तो सब डेल है, HP है, अरिस्टा है. So it was a management decision that they want a cost cutting. They don't want a Cisco. They went for a cost cutting. They installed the network equipments which are little bit cheaper than the Cisco. But how I survived? Okay, how I survived because my concepts were clear. If you are a network engineer, okay, have you done the CCN or anything? No problem. For example, take any concept of a networking. For example, BGP routing protocol. If you have worked on a network, if you have some background of the network, anyone knows about the BGP protocol? Anyone? BGP protocol, OSPF protocol, routing protocols, any kind of protocols. Okay. If Yeah, you're I work on Yeah, I yeah. work on BGP. Yeah, good. So if you know the BGP, it doesn't matter whether you are working on a Cisco, Juniper, Arista, or Palo Alto. Doesn't matter. Your concept should be very clear. If you know about the VLANs, if you know about the interVLAN routings, if you know about the nettings, different technical parts, if you know about the access control list, these are the technical points I'm discussing. Okay. These are supported by each and every vendor in the market. Now today's market is so diverse that you will find number of vendors, products connected to each other. Cisco is connected to Juniper, Juniper is connected to Palo Alto, Palo Alto is forwarding traffic to FortiGate. We have the F5 load balancers, 8 Light 10 load balancers, and so on. So how can you survive? If your concepts are very clear, you can configure any network devices or security devices. But the concept should be very clear. So today's challenge is a multi-vendor, multi-technology. If you are just a routing and switching, you cannot survive. Why? See this simple example. It is a very simple example where you can see that in the bottom we have some network switches. Okay. Then you have some clients, switches, connected servers, gateway. The main important thing is the firewall. If something goes wrong, the major challenge the network issue faces is that if something working goes down, for example, a site was working, website was working, and currently it's not working. A ticket gets opened and is assigned to the network engineer. You have to check right from the server NIC. Okay, for example, you have to check from this server point of view, this switch. You might have some load balancers, you might have some cloud connectivity, you might have some MPLS, you might have some VPNs, you have firewalls. So many stuffs are there. How to prove it's not a network issue? Some background noise. Can you please mute? Okay, thank you. Okay, so I want to say that the network can have so many components. Here you see the firewall. Here you see the load balancers. See this big IP. I will give you example of this big IP load balancers. It is you can say one of the simplest diagram for a data center. Okay, if any one of you have might work in the data center, you should know what is the architecture of a data center. You have the access layer, you have the aggregation network, you have the core network, you have the internet connectivity. But it's looking very simple here on the paper. When you really work at the data center level, you have so many firewalls involved, you have so many load balancers involved, you have storage devices involved, you have EXI servers, you have the virtual machines, you have the SAN switches. It's a very complex network. You have so many connectivity, you have MPLS, you have IPsec VPNs, you have point to point. Okay, you have
SSL VPN, so many types of connectivity, so many types of complications, netting, packet capturing, IPS, IDS. Anyone knows about the IPS? What is IPS? If anyone is working in the security profile, IPS. Anyone? The internet service provider, No, that is IPS. IPS. Intrusion prevention system. IPS. Intrusion prevention system. For example, here you see that from the internet you have the connectivity to the data center. Okay. What if a hacker is doing some kind of DDoS attack? What if a tracker is trying to bring down your website? What if a hacker is trying to do some kind of mail attacks, phishing attacks? What if you want to send some kind of viruses? Intrusion prevention system. How will you detect that? One is IDS, intrusion detection system. One is intrusion prevention system. IDS will detect, one will detect, other will prevent. So the major challenge about any data center, any network, any office, any business is the security. Because internet is a global reachability, right? Anyone from the world, it can generate some kind of attacks on your websites. Just imagine if someone attacks a website of IRCTC, you know, the railway booking reservation center, right? You can book your tickets online. If anyone tries to bring down that site, the railway will have millions and millions of loss in a day. So how these things are managed? So this diagram looks very simple, but when the components are connected to each other, the network is connected to we have the servers, we have the storage, we have the SAN, we have the EXS servers, we have the virtual machines, we have the IPS, we have the IDS, we have the Palo Altos, we have Checkpoint. So many complex things are there. And when you are asked in a troubleshooting call, the website is not working, the first question comes to mind, यार कहाँ पे check करूँ? अगर आप में से कोई काम कर रहा है रियल में अभी, okay, I hope many of you are working. Have you faced anything like that? If the things have down हो चुकी है, there is a bridge call, there is a escalation ticket, आपको कॉल पे जाना पड़ता है और आपको कॉल पे बताना पड़ता है कि कहाँ डाउन हुआ है. कोई एनीवन? Yes. I hope the one is working in the data center might be knowing. I don't remember the name. Okay, I'm not looking at the Teams chat. How many we have attendance now? Brijesh? Hello? 18, How much? 18 something. Okay, let it be. So my question is that what will be your approach for the troubleshooting? Okay, if I say there is a slowness in the website, देखो एक चीज ध्यान में रखो. So there is a message, guests are waiting in the lobby. Okay, so currently how much attendance we have? Okay, 18. So coming to this diagram, okay, it is one of the simple architecture of a network diagram. So my question is that if someone says, application team says that my website is working very slow, it is working but very slow, and they have blamed it's a network issue. ये होता है, बहुत common चीज है. If you are working as a network engineer anywhere, you might face the issue that the website is slow and they are blaming it's a network issue. Now you have to prove it's not a network issue.
ये होता है, मेरे साथ रोज होता है ये। और मेरा रोज फाइट होता है सर्वर टीम के साथ, एप्लीकेशन टीम के साथ मेरा रोज फाइट होता है आज भी। They blame it's a network issue. I have to prove it's not a network issue. I have to check the firewall. I have to check the load balancer. I have to check the network. I have to choose the utilization. I have to check the bandwidth. I have to check the latencies. So many parameters I have to check. And I have to prove it's not a network issue. Then I have to tell them, have you checked at the server level? Then they say, oh, my CPU utilization is very high at the server level. Server का issue है. ये बहुत common चीज है. So right from server NIC card to the internet, whatever the components are coming into the picture, whether it's a switch, it's a router, it's a firewall, it's a load balancer, it's any kind of monitoring device, anything can be within the path, MPLS link, anything, IPsec. You should know each and everything to survive in today's complex network. 10 साल पहले 15 साल पहले लोड बैलेंसर इतना फॉर्म में नहीं था, सिक्योरिटी फायरवॉल इतना फॉर्म में नहीं था। हमारा काम बहुत आसान था, ठीक है भाई नेटवर्क का पोर्ट अप है, मेरा काम हो गया। मुझे बीजेपी से राउट्स मिल रहे, मेरा काम हो गया। मेरा ओएसपीएफ है पे मेरा काम हो गया। इंटरफेसेस आप है, मेरा काम हो गया। आज ऐसा नहीं होता है। ओके, इवन आज की कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या हो रहा है? ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क मींस फिजिकल डेटा सेंटर, these are getting migrated to a cloud. Have you heard about the cloud? आज तो हर किसी ने सुना होगा क्लाउड, AWS क्लाउड, Azure क्लाउड, GCP क्लाउड, Oracle क्लाउड, right? So what is the challenge now today? Physical data centers, they are getting decommissioned slowly, and the applications are getting migrated to the Azure or AWS or GCP, Google Cloud Platform. This increases the complexity, how to provide the connectivity between a cloud and the on-premises data centers. If there is an issue, where to check? Cloud में कहाँ check करना है? Physical network में कहाँ check करना है? Providers में कहाँ check करना है? There are so many complexities getting involved today. So coming back to these things, when you speak about the role of a network engineer, okay, it can have any vendor, any device, any platform configuration and troubleshooting and support. Support means anyone? Very simple term. What is the support? If anything is already in the production, suppose you have a new customer, he is onboarded on a particular platform, whether it's a Google Cloud or Azure or on-prem, anything. जब वो live हो जाता है, then anytime if a service goes down, whether a mail service, file service, web service, anything goes down, then the support team comes into the picture. The support team can have the network team, the support system team, database team, Oracle team, any application team, anything can be there. So you should be able to provide all kind of support and to all kind of platform, whether it's a network, security, load balancer, anything you should be able to support. Okay. Okay. Then what else the network engineer has to provide? There's one point: perform network maintenance and system upgrades. Okay, you know that every day there are vulnerabilities. So what are vulnerabilities? If any bug is found in a running software, see every router, every switch, every firewall, every Palo Alto device, every load balancer, they are running on a specific version of a software. If they find there is a bug, then that needs to be renewed. और ये हर साल होता है. In every company, you will find that every year there is a cycle where they perform the firmware upgrade to eliminate the risk of a vulnerability. Okay, if you have certain kind of attacks, your entire network may go down. So it's the responsibility of the network engineer to keep everything up to date, whether it's any kind of devices. If you don't do that, you are at a danger. Okay, provide L1, L2, L3, and L4 support. So what is the difference between L1, L2, L3, L4 support?
Come on, it's very simple. Anyone can answer. Hope you can hear me. I want a two-way session. Anyone working as L1 here? L1 में बंदा फिजिकली इंटरफेस अपना चेक कर लेगा, थोड़ा बहुत आईपी रूटिंग चेक कर लेगा, बाकी जो और इश्यूज आए तो उसके लिए L2 जाएगा, अगर वेंडर के पास जाएगा तो L3 के पास जाएगा। ओके, जो इसमें होगा राइट, इसमें राइट बोला, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। जैसे आपने L1 बोला, L1 का काम में से कि फिजिकल इंस्पेक्शन कर लो डिवाइस का, केबलिंग करना है, क्रिम्पिंग करना है, या फिर कुछ बेसिक पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे वीलाइंस चेंज करना है पोर्ट का। ओके, पोर्ट को शट करना है, नो शट करना है, पोर्ट का स्पीड बदलना है, पोर्ट को ऑटो निगोशिएट करना है। वेरी वेरी बेसिक थिंग, जहाँ पे कि ज्यादा आउटेज का चांसेस ना हो। L1 मीन्स इट्स अ वेरी बिगनिंग लेवल। अगर कोई बंदा कॉलेज पास आउट है, कोर्स करता है, तो सबसे पहले उसको काम क्या मिलेगा? अगर फ्रेशर है तो ही विल बी एज L1। L1 का काम बहुत सिंपल होता है, एक बेसिक मॉनिटरिंग भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, हर एक कंपनी में वी हैव द नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। Okay, for example, if a company is having 1000 network devices, which includes routers, switches, firewall, load balancer, and so on, there will be a monitoring tool, monitoring portal, which indicates if a device is up or down, any interface got flapped. क्योंकि इंसान के बस की तो बात है नहीं ना कि 1000 राउटर स्विच को मैं हमेशा देखते बैठूं कौन सा पे कौन सा डाउन है। हर सेकंड कोई ना कोई पोर्ट अप होता है, डाउन होता है, फ्लैप होता है, मैक एड्रेस फ्लडिंग होता है, राउटिंग लूप हो जाता है, स्विचिंग लूप हो जाता है। ये सारा चीज होता है मॉनिटरिंग टूल में कैप्चर, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द L1 इंजीनियर टू मॉनिटर दैट एंड इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली टू L2। L2 के बस की बात अगर रही, उसको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो ठीक है, ओके। अदरवाइज वी हैव द L3। So L3 is a very common position. So what does L3 means? When there is any kind of outage, okay, for a customer का कुछ चल रहा था, वेबसाइट चल रही थी, कनेक्टिविटी था, बंद पड़ के डाउन हो गया। So there is a live breach, live troubleshooting calls are initiated। अभी आज की कोई भी कंपनी में आप जाओ, अगर कुछ आउटेज होता है तो टिकट ओपन होता है और एक ब्रिज कॉल ओपन होता है। तो ब्रिज कॉल में आपको वहां पे नेटवर्क का पॉइंट रखना पड़ता है कि भाई नेटवर्क साइड से क्या फाइंडिंग्स है आपकी। L1 and L2 they are not capable enough, I will say, to handle that kind of pressure। क्यों? ब्रिज कॉल में कौन कौन आता है? प्रोग्राम मैनेजर्स, डिलीवरी मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, इवन the customers, they also come and join the calls. Okay, what's going on? So to answer, and you get hardly 10 to 15 seconds to find what is the issues. They will continuously ask you, what is the update? What is the update? Why it is down? What are your findings? It's a very mental pressure game. So you should be very clear what is the packet flow. Okay, otherwise even 1 hour will be short for you to troubleshoot कि भाई issue कहाँ पे है. Okay, that's why we have the L3s. L3s are, they are driving the calls. L3, what they do, anything goes down, they have to jump into the calls. They have to work with the customers. They have to work with the managers and try to perform live troubleshooting. Where is the issue? If L3 is not able to fix, then we have the L4, network architecture. The network architecture is the one who has designed the network, who knows each and everything. पैकेट कहाँ से आ रहा है, पैकेट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे राउटिंग है, कहाँ पे लिंक्स टर्मिनेट है. He knows each and every part. If L3 takes 1 hour, then we have the network architecture. He will fix the issue within 5 to 10 minutes. उसको सब पता होता है. But depends the difference between L1, L2, L3 and L4. What technologies they have worked on, how much theoretical knowledge, technical knowledge and expertise they are having. So all these things were about the network and routing and switching part. Now coming little more on the security part. The security term itself means that we have to save something from someone. Okay, in short देखो अभी simple example ले लो. हमारा जो फ्लैट होता है उसमें एक डोर होता है. डोर से कौन आ सकता है? जिसको हम अलाउ करते हैं, जो हमारे पहचान का है या हमारे फैमिली मेंबर आ जा सकता है. Similarly, in a network, in a corporate network, consider this network. Consider this network.
You have the LAN network, we have the switches, clients, servers, and cameras, printers, so many things are there. Okay. These are all behind the firewall. And the firewall is connected to the gateway, which is having the internet connection termination. So internet means unsecured network. ये तो मानते हो ना? Okay, what is internet? It's an unsecured network, global network. कोई किधर से कुछ भी कर सकता है. So you can't imagine any data center, any bank office, any corporate office, any small office without a firewall. Agree? At least I have not seen a single network where we don't have the firewalls. If you don't have the firewalls, your network will get hacked within seconds. The hackers are using so many sophisticated tools to scan the network, to scan the network ports, to scan the IP addresses which are open. They don't have the security, though they don't have the upgraded software versions and so on. So firewall, without firewall, network can't be imagined. अभी क्वेश्चन क्या कि फायरवॉल में करते क्या है? ठीक है, फायरवॉल क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट सब बंद कर देगा. हमको वैसा तो नहीं चाहिए ना. वी डोंट वांट फायरवॉल टू ब्लॉक एवरीथिंग. वी वांट फायरवॉल टू अलाउ ओनली दैट पार्ट दैट इज जेन्युइन. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 ब्रांचेस है, 4 मेरे बैंक के ब्रांचेस है, आई वांट ट्रैफिक फ्रॉम दोस 4 ब्रांचेस ओनली. आई कैन add the policy, I can add the rules, which we call as a firewall policy. So as a security engineer, it's your responsibility कि भाई हमारे नेटवर्क में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या ब्लॉक होगा, क्या ब्लॉक नहीं होगा, किस ब्रांच से आएगा, उस ब्रांच से क्या सबनेट आएगा, क्या आईपी एड्रेस अलाउड होंगे, कौन से यूजर्स अलाउड होंगे, वो ब्रांच कितना इंटरनेट यूज कर सकता है, कितना बैंडविड्थ यूज कर सकता है. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई if anyone is doing some kind of time pass in the LAN network, he is trying to open the Facebook. ऑब्जर्व किया होगा ना, ऑफिस में बैठ के लोग फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, अनवांटेड साइट्स देखते हैं, पॉर्न साइट्स देखते हैं, कोई कुछ भी देखता है, कोई स्पोर्ट्स पढ़ते देखता है, कोई न्यूज पढ़ते रहता है. इन द फायरवॉल यू कैन फिल्टर व्हाट साइट्स यू वांट द यूजर टू एक्सेस. मैंने तो ऐसा भी देखा है कि भाई मेरे बाजू वाला, जो मैं कंपनी में था, वो बाजू वाला मेरा naukri.com खोल के बैठता था, वहां से सीवी अप्लाई करता था और वहां से वो अपना जॉब रिज्यूम भेजता था. क्यों? वी वर द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर. हम ही तो मैनेज करते थे, हमको पता है भाई क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. बट फॉर अदर्स इट वाज ब्लॉक्ड. ओके, सो यू कैन डिफाइन द रूल्स, द पॉलिसीज. व्हाट एप्लीकेशन, फेसबुक बंद कर दो, टाइम पास नहीं करना है मेरे को, यूजर ने टाइम पास नहीं करना चाहिए, फेसबुक ब्लॉक कर दो, यूट्यूब ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप चैट ब्लॉक कर दो. ऐसा भी होता है कि कोई कोई क्या करता है, दे सेंड सम confidential files over the internet. Okay, if you are working for a company, the documents you have the access, so it should be that none of the documents should be sent to your personal Gmail or Yahoo or Rediff. Okay, नहीं तो क्या होगा, डेटा लीक हो गया. For example, someone is working in the R&D department, someone is working in some design department, someone is working in the financial department. He can send any kind of report to his personal mail ID. Agree? At least yes तो बोलो सामने से. Yes. We have that, we have that challenge. Okay, we have that challenge कि anyone in the LAN user, whether he is a clerk, he is a manager, or he is any kind of person, if he has a laptop or a desktop, he can send a document attachment to his personal mail ID. He can do some data leakage. That is a major challenge, and firewall can block also that part. You won't be able to send any kind of attachment to your personal mail IDs. Okay, there are number of tasks. The सबसे important task I will say is this one: IPsec VPNs, IP security. So what is VPN exactly? Okay, एक छोटा सा idea देता हूँ. You see his right side, you have a server. Okay, this server, you have a headquarter here, and you have few branches, branch 1, branch 2. Okay, you have the internet. So normally what happens when you
want to connect 2 sites, 3 sites, 4 sites, you go either with the MPLS connectivity, which is a dedicated one, costly. You go for a P2P, P2P, point to point, or you go for some other kind of connectivity. These are dedicated links. Whether you use or you do not use, you have to pay the monthly charges. Okay, but the cheaper part, the cheaper technology is the IPsec VPN. Here you only need a internet connectivity at the head office and at the branch office. Then over the internet, you build an IPsec tunnel. You see this? Okay. So what is a tunnel exactly? आपने देखा होगा जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, स्पेशली घाट सेक्शन से, एक टनल आता है बीच में, पहाड़ी को खोद के पूरा टनल बनाया जाता है. Okay, and the tunnel has just 2 endpoints, one at the left side and the right side. Okay, so this technology is widely used in almost any corporate, any data center, any offices. Q, you don't need dedicated MPLS or dedicated P2P link, which are very costly. Each and every firewall, each and every router supports the IPsec VPN technology. So take example, if a branch, SDFC branch is having 100 offices, 100 branch offices. Okay, if they can support high cost bandwidth of MPLS, point to point link, multi point link, then fine. But if the small offices, they can't. Okay, or you can take any showroom. For example, take Adidas showroom. You have many outlets for the Adidas. Okay, for example, you have in a city you have 20 outlets. All those 20 outlets can be connected to the main branch over the IPsec VPN connectivity. They will use the internet, but they will build a IPsec VPN tunnel. You see at the bottom VPN tunnels. So this technology is widely used in each and every organization. Without IPsec, you can't imagine a single network. If you want to have a connectivity between your laptop, personal laptop, and my laptop, we can build an IPsec tunnel between the modems. Your broadband modem, my broadband modem, we can build IPsec tunnels. We can have the private connectivity. So with this, you will be able to reach the branch network to this head office over the internet, but through this IPsec VPN tunnels. It's a very great technology and quite difficult, but it's widely used. So you should know, and that IPsec is also built on the firewall. Even the routers support the VPNs. Okay. Now, one of the good example of the firewall, you know that in the COVID, okay, many IT organizations, I think each and every organization, they ask their employees to work from home, right? Agree? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So imagine that network and security engineer, उसको क्या करना पड़ा होगा? What changes were required to be made on the firewall? Any idea? If this kind of situation comes, everyone has to work from the home. How they are connecting from their home to the corporate office? They are able to access all their mails, their chats, their files, folders, each and every resource within the organization, as if they are working in the office itself. Okay, so they use the SSL VPN. SSL VPN means remotely. Okay, when you have a laptop, you can travel anywhere in the world. If you have the internet connectivity, you will try to connect with that VPN. That VPN will try to connect with the firewall. It will authenticate your username, password, or certificates. It will check your user account in the Active Directory backend, and it will grant you a connection. So VPN means virtual private network. Remote VPN users. Okay, more friendly word is remote VPN users. You can connect with firewalls. Okay, from your laptop, personal laptop, office laptop, any device.
If you have the required permissions, if you have the required credentials, username and password, you can connect with that. So that is also part of a security engineer. यहाँ पे अगर if you just know the network part, the routing and switching, then you are helpless. If you just do the CCNA routing and switching, you will not be able to handle any task of the firewall. Okay. Another example of a, yeah, go ahead. ये जो SSL VPN कनेक्टिविटी है ये आप फायरवॉल में ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पॉलिसी भी नहीं लगाते हैं? फायरवॉल में आपका क्रेडेंशियल बनता है, आपका ये बनता है, यूजर आईडी बनता है, और वो उसको आपने रेडियस सर्वर सुना है, बैकएंड में रेडियस सर्वर होता है, एक रेडियस सर्वर होता है, तो रेडियस सर्वर आपका ऑथेंटिकेशन करता है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बैकएंड में। लेकिन आपका लैपटॉप किसको कनेक्ट करेगा? उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? फायरवॉल। ओके, देन फायरवॉल बैकएंड में आपको ये करेगा, टेकएस चेक करेगा, रेडियस चेक करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करेगा, आपकी परमिशंस क्या है, क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, आपके रिक्वायर्ड यूजर नेम पासवर्ड्स क्या है, वो सब वैलिडेट करेगा। वो होने के बाद आपको एक्सेस, देखो दो चीज होता है, वन इज ऑथराइजेशन, ओके, अनदर इज ऑथेंटिकेशन। आपका ऑथेंटिकेट तो हो गया कि यू आर अ वैलिड यूजर, बट व्हाट यू आर एबल टू एक्सेस, वी कैन आल्सो कंट्रोल दैट पार्ट। ओके, आप XYZ सबनेट कनेक्ट कर सकते हो, आप R&D डिपार्टमेंट कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, आपको जैसे नेटवर्क इंटरनली बनाया है, we can control each and every aspect of that. Okay, the next part comes, yeah, good. ये जो ऑथराइजेशन है, मतलब ऑथेंटिकेशन तो हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, अपना डोमेन आईडी जो भी है उससे हो गया। ऑथराइजेशन कहाँ डालते हैं? ये भी सब ये ऑथराइजेशन कहाँ से चेक करता है? फायरवॉल में, हाँ वही बता रहा हूँ, फायरवॉल में यू कैन कॉन्फ़िगर द टेकएस सर्वर्स और रेडियस सर्वर्स, ओके, और यू कैन हैव द आयरन टेक, क्रॉनटेक बोलते हैं, क्रॉनटेक, यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर द क्रॉनटेक। मतलब देखो बैकएंड में ने क्या, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सर्वर्स पे रन होते हैं, ये फायरवॉल वहां पे चेक करेगा, आपका जो रिक्वेस्ट आया वो पीछे भेज देगा कि भाई ये बंदा आ रहा है, इसका यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है क्या, ठीक है, इसको एक्सेस के राइट्स क्या है, ये क्या एक्सेस करेगा क्या नहीं करेगा। मतलब यू आर डिसेंट्रलाइजिंग द स्टफ्स नाउ, ओके, you have the option, you create the local database, you define everything locally, or you forward that request from the firewall to the backend servers, he will authorize what the user is able to access or not. Okay, you don't want firewall to be heavily overloaded. Firewall बहुत सारा काम कर रहा है, पॉलिसी चेक कर रहा है, एप्लीकेशन चेक कर रहा है, IPsec VPN बना रहा है, SSL VPN बना रहा है, उसको अगर और लोड डालोगे तो वो क्या होगा, वहां पे लैग करेगा परफॉर्मेंस में। ओके, सो दैट इज पार्ट इज देयर। आपने क्या बोला, क्रॉम्प्ट, क्या बोला था आपने? क्रॉनटेक आयरन स्पीयर क्रॉनटेक होता है, एप्लीकेशन ऐसा। So another part of firewall is, I think, netting. You might have heard of the netting. Netting का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। You know about the IP address? किसी को कुछ आइडिया है क्या? मतलब मैं अभी एक दो जन से बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, बस बाकी लोग शायद शांत है। ओके, तो फायरवॉल का और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेट। नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लैपटॉप पे जो IP एड्रेस है वो प्राइवेट IP है या पब्लिक IP? सिंपल क्वेश्चन, जो भी अभी मतलब सेशन में है, कैन यू जस्ट टेक द IP एड्रेस ऑफ योर लैपटॉप? प्राइवेट IP। प्राइवेट IP। Public. पब्लिक किसने बोला? योर लैपटॉप इज हैविंग अ प्राइवेट IP। ओके, Public IP address. हाउ, क्या IP है आपके लैपटॉप का? IP क्या है आपका? 74 dot something है सर। तो मैं फोन पे हूँ। आप, अच्छा आप फोन पे हो, ठीक है, पर उसमें भी एक चीज होता है, एग्री करता हूँ मैं, अगर हम लैपटॉप की बात करें, स्पेसिफिक लैपटॉप की बात करें हम लोग, ठीक है, तो नॉर्मली हमारे मशीन को होता है एक IP एड्रेस होता है जो प्राइवेट IP होता है। तो जस्ट लेट मी टेल यू द IP फॉर एग्जांपल। So I am using the Wi-Fi network. Okay, I have so many NICs in my laptop, virtual NICs. So this is my IP, 192.168.1.19. This is my gateway. Okay.
private IP address cannot be advertised on the internet. I repeat, private IP address cannot be advertised, published on the internet. तो क्वेश्चन ये ना भाई, मेरा लैपटॉप पे इंटरनेट कैसे चल रहा है? ओके, एंड इफ आई चेक my IP address, if I check my IP address, what is my IP address? Then you will see my IP address is 588462. Okay, it is connected to Tata Broadband Mumbai location, something like this. This is my IP. The question क्या है भाई, मेरा IP तो ये है. Okay, if you have to check the other NICs also, these are private IP. So how I am getting the public IP address? Okay, this is because of a NAT. और यहाँ पे नेटिंग कौन कर रहा है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? माय मॉडेम, माय ब्रॉडबैंड मॉडेम. ओके, इफ आई नीड टू यूज द इंटरनेट देन माय मॉडेम विल डू द नेटिंग. लेकिन कॉर्पोरेट्स में ये तो घर की बात है, एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप, 4-5 मशीन में हो गया, काम चल गया. कंपनीज में कैसे करोगे नेटिंग? यू गेट माय क्वेश्चन? व्हाट इज द चैलेंज? अगर कंपनी में नेटिंग करना है, कंपनी में तो भाई सोचने की बात है, 100 यूजर हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं. कॉर्पोरेट्स में तो भाई 1000 यूजर होते हैं, 2000 यूजर होते हैं. उधर तो छोटा मॉडेम चलेगा क्या? अपना चलेगा क्या जो अपना ब्रॉडबैंड मॉडेम चलेगा कॉर्पोरेट में? डू यू थिंक दैट विद द कॉर्पोरेट इंटरनेट you can use the home broadband modem and run the internet for 1000 users? No. But you know the technology. आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई, नेट लगेगा तो नेट कहाँ पे होगा? ओके, फायरवॉल नेटिंग का भी काम करता है. आपके क्या यूआरएल चलने चाहिए, क्या नहीं चलने चाहिए, so many stuffs are there the firewall can control. Okay, if you don't want to use this gateway, you can remove this gateway. ये जो router है gateway, for cost effective you can reduce or you can remove this gateway. You can terminate the link directly on the firewall. Cost cutting कर लो, क्या जाता है, लेकिन डिपेंड है. One more technical topic. Okay, hope you are getting. अगर आपको कुछ क्यूरीज है आप मुझे बीच में रोक सकते हो. Okay, वैसे हमारा एक सेक्शन है अलग से, क्वेश्चन सेक्शन है. So let me finish this part. Another very important component of a network is a load balancer. Okay, अभी आप बोलोगे लोड बैलेंसर क्या है चीज है? यहाँ पे see this last two lines, F5 load balancers and A10 load balancers. आज की तारीख में मार्केट में F5 load balancers की धूम मची हुई है. You should know that part. F5 load balancer क्या होता है, करता क्या है, सिंपली करता क्या है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. इमेजिन करो कि आप एक शो बुक कर रहे हो, बुक माई शो. ओके, अभी कोई नई पिक्चर रिलीज हुई कि शायद गदर 2 रिलीज हुई है, ओ माई गॉड 2 रिलीज हुई है. इफ यू वांट टू बुक अ टिकट, ओके, आपने वेबसाइट खोल दिया, एप्लीकेशन खोल दिया, चालू कर दिया, टिकट बुक हो गया. फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सब काम हो जाता है. अभी बैकएंड में इफ यू आर नेटवर्क इंजीनियर, ओके, बैकएंड में तो कभी सोचो एक सेकंड में एट ए टाइम कितने लोग वहां पे टिकट बुक कर रहे होंगे? एनी आइडिया? Approx 10-20. बस 10-20? के से hundreds of people. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाख लाख लोग होंगे. लाख होंगे. एग्री. एग्जाम्पल चलो और बड़ा एग्जाम्पल लेते ना. रेलवे रिजर्वेशन सेंटर irctc.co.in. आपको टिकट मिलता है सुबह 8 करोड़ों बजे में के जाता बाद. हूँ. आप क्लिक करते ही मालूम पड़ता है कि भाई टिकट बुक हो गई, वेटिंग में आ गया. तत्काल टिकट, ओके, तत्काल टिकट आप जब बुक करते हो 11 बजे के बाद, आप जब तक यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो, आपने वो सर्च किया, बर्थ सर्च किया, क्लिक किया, तब तक वो टिकट बुक हो गया, खत्म हो गया. तो ये जो चैलेंज है ना, अगर एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप टेक्निकली सोचो इसको, इतनी जो रिक्वेस्ट आ रही है बैकएंड से, ये कौन हैंडल करता है? ठीक है, ये हैंडल कौन करता है? तो बैकएंड में होते हैं लोड बैलेंसर्स. लोड बैलेंसर का नाम भी मतलब क्या है? देखो सिंपल है,
इमेजिन करो कि आपको एक काम करना है, मैंने आपको बोला कि आपको एक वॉल पेंट करना है, वो वॉल पेंट करने के लिए आप अकेले आदमी हो। वो आदमी क्या करेगा, दिन में 8 घंटा काम करके वॉल पेंट कर देगा, पर वो एक आदमी थक जाएगा। चलो मैंने क्या बोला, चलो मैं 4 आदमी लगा देता हूँ। वो 4 आदमी का काम भी किया, वो भी थक गए, काम जल्दी टाइम पे नहीं हो रहा, मैंने 8 आदमी लगा दिए। क्वेश्चन क्या है अभी, ये 8 आदमी में लोड कैसे बैलेंस होगा? सिंपली उसी तरह आप देखो, यू सी दिस लेफ्ट साइड कंप्यूटर, ओके, यहाँ से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, इट इज गोइंग टू द फ्रॉम द इंटरनेट एंड कमिंग टू द लोड बैलेंसर. Now this load balancer is responsible for distributing the incoming requests between the backend servers. ये एक सर्वर है, ये सेकंड सर्वर है, ये थर्ड सर्वर है, ये फोर्थ सर्वर है. तो होता क्या है, अगर आपने लोड बैलेंसर इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर किया है नेटवर्क में, तो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, लोड बैलेंसर को स्मार्टली क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट है इसको सेंड कर देगा, भाई तू हैंडल कर ले रिक्वेस्ट. दूसरी रिक्वेस्ट है इसको दे देगा, थर्ड रिक्वेस्ट है इसको दे देगा, फोर्थ रिक्वेस्ट है इसको दे देगा. बैकएंड में डेटाबेस होगा, बैकएंड में स्टोरेज होगा, बैकएंड में वीएम्स होगा, एंड सो ऑन, वो सब चलते रहेगा. अगर ये लोड बैलेंसर नहीं रहा तो आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है वो किस सर्वर पे जाएगी, उस सर्वर पे इतना लोड हो जाएगा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा आपका. आपने कभी देखा है क्या, जब रिजल्ट्स निकलता है 10th का 12th का सीबीएसई का या कोई ऐसा मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, उस दिन सर्वर चलता ही नहीं, साइट चलती नहीं है. सुना होगा सर्वर क्रैश हो गया, साइट क्रैश हो गया. यस सर. क्यों क्यों होता है ऐसा? हो सर्वर सकता पे है लोड कि सर ज्यादा ही पड़ जाता है. सर्वर पे लोड ज्यादा पड़ता है. तो क्वेश्चन क्या है कि वहाँ का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या जो आर्किटेक्ट है, उसने जब नेटवर्क डिजाइन किया तो उसने प्लानिंग की थी क्या कि भाई इस पीक टाइम पे इतना लोड आएगा, उतना लोड आने के लिए मेरे लोड बैलेंसर्स के पीछे बैकएंड में सर्वर से कितने सर्वर से कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस क्राइटेरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. मल्टीपल क्राइटेरिया रहती है वहाँ पे, ओके, वो सब टेक्निकल टर्म्स है बैकएंड के. तो ये लोड बैलेंसर भी आज के तारीख में यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल नेटवर्क विदाउट लोड बैलेंसर. पहले था चलो भाई मेरे को राउटिंग स्विचिंग आ गया, मेरे को जॉब मिल गया. बाद में सिक्योरिटी का कंसर्न आ गया, चलो मैंने राउटिंग स्विचिंग कर लिया, सिक्योरिटी भी आ गया मेरे को, फायरवॉल भी आ गया. अभी कंसर्न क्या भाई, वेबसाइट डाउन हो जा रही है, फायरवॉल में तुम चेक करोगे, हाँ भाई फायरवॉल तो अलाउ कर रहा है, मेरा नेटवर्क पे, पोर्ट पे, राउटिंग प्रोटोकॉल पे, लिंक पे, पर फिर भी मेरी वेबसाइट डाउन है. क्यों? लोड बैलेंसर तुमको नहीं आ रहा है. और आज की तारीख में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया जॉब प्रोफाइल्स में, दे आस्क फॉर द लोड बैलेंसर्स. ओके, विदाउट लोड बैलेंसर्स इट्स नॉट पॉसिबल. से दिस ये परसिस्टेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट है. राउटर स्विचेस फायरवॉल्स एंड लोड बैलेंसर बहुत कॉमन हो गया. आजकल तो ऑटोमेशन भी मांगते हैं, उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे, ऑटोमेशन के ऊपर क्या चीज़ है. ठीक है, तो राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग, इन सब का आपको जो मेन इंपॉर्टेंस है मुझे लगता है वो समझ में आया होगा. अभी ये जो बंदा है यहाँ पे, अभी हम और यहाँ पे कुछ देख रहे थे, ठीक है, इफ यू हैव वर्कड एट द डेटा सेंटर लेवल, ओके, फॉर्चुनेटली मुझे मिला है काम करने के लिए डेटा सेंटर, मैंने फिजिकली काम किया है, ओके, एज L1 L2 L3 मैंने सब काम किया है. ऐसे जब रैक्स होते हैं ना, एक अलग फीलिंग आती है, अलग खुशी मिलती है कि भाई यस आई हैव अचीव व्हाट आई वांट इन द लाइफ. जब आप ऐसा काम करते हो यहाँ पे, यू कॉन्फ़िगर राउटर्स, यू कॉन्फ़िगर स्विचेस, लोड बैलेंस, एवरीथिंग यू कॉन्फ़िगर इन द डेटा सेंटर. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स. मतलब मार्केट ट्रेंड है अभी, ये लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड चल रहा है अभी यहाँ पे. सी दिस विप्रो में एक चीज क्या है, दे हायर सम स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल LTM एंड GTM. LTM का मतलब पता है फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल ट्रैफिक मैनेजर, एंड वन इज द GTM. Pragati is raising hand. Any query? Pragati Singh? You want to say something? Brijesh, we will do one thing. We have the question and answer session, the last. Okay, 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 no we problem. will have that open session, right? Yes. So nowadays, along with the LTM, you should also know the GTM part. Okay, GTM. Now let's say take a simple example. अगर मैं आपको पूछूं कि Facebook, okay, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, फेसबुक का जो वेबसाइट है उसका IP क्या है, कोई बता सकता है? फेसबुक का सर्वर का IP क्या है या URL का IP क्या है?
If I do NS lookup, name server lookup, okay, it.fb.com. ओके मैंने क्या किया, मैंने एक NS लुकअप किया, नेम सर्वर लुकअप facebook.com. मुझे फेसबुक के इतने सारे आईपीज है मिले, ओके मेरे को इतने सारे आईपीज मिले फेसबुक के, मैं ये आईपी उठाता हूँ, मैंने आईपी यहाँ पे डाल दिया सपोज, यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, नॉट सिक्योर। ये सर्टिफिकेट किस लिए होता है, देखो नाम तो बरोबर है ना, फेसबुक बरोबर है, राइट? ओके एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, ये जो आ रहा है नॉट सिक्योर और यहाँ पे एक ताले का सिंबल होता है, लॉक का सिंबल होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? When you visit a website, especially when you visit a bank site, okay, let's see HDFC net banking. Secure. यहाँ पे मुझे एक लॉक का सिंबल दिखता है और मुझे यहाँ पे लॉक का सिंबल नहीं दिखा, मुझे नॉट सिक्योर आ गया। लेकिन मैं अगर इसकी डिटेल्स में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, है तो ये फेसबुक के लिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं जब यहाँ जाता हूँ तो मुझे अगर सर्टिफिकेट मिलता है, सर वो सर्टिफिकेट जो है facebook.com के लिए इशू हुआ है, वो आप आईपी एड्रेस के लिए नहीं है। ओके राइट, द सर्टिफिकेट इज असाइंड टू द URL, ओके एंड नॉट द आईपी एड्रेस। यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन है। पहली चीज, ये सर्टिफिकेट कहाँ पे होस्टेड है? ओके ये अगर ये सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है, डिटेल्स में जाता हूँ, जो सर्टिफिकेट है ये कहाँ होस्टेड है? सर ये वेबसाइट के ऊपर होस्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली F5 लोड बैलेंसर के ऊपर ही होगा, लेकिन जो इसका प्राइवेट की है वो आपके लैपटॉप पे होगा। सॉरी, पब्लिक की जो है वो आपके लैपटॉप पे होगी, प्राइवेट की होगी सर्वर के ऊपर ही, आप समझ लो। अगर सर्वर के आगे लोड बैलेंसर रखा हुआ है तो लोड बैलेंसर पे होगी। राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज एन SSL ऑफलोडिंग। ओके सो बोलने का मतलब ये है कि F5 लोड बैलेंसर और क्या करता है। ओके लोड बैलेंसर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप जो भी वेबसाइट होस्ट करते हो उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के लिए, कि भाई आप अगर HDFC में लॉगिन कर रहे हो सकता है कोई फिशिंग साइट्स हो, फिशिंग साइट में तो क्या होता है, डुप्लीकेट साइट होता है। आप कैसे पहचानोगे कि भाई आपकी साइट ओरिजिनल है कि ओरिजिनल नहीं है? तो अगर यहाँ पे आप जब जाते हो और यहाँ पे आपने जब चेक किया सर्टिफिकेट कि हाँ भाई मुझे तो HDFC दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट HDFC को साइंड है, मीन्स यू आर सेफ। बट एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस? और सबसे अच्छी बात तो ये दिखाना आपको, हर एक सर्टिफिकेट की एक वैलिडिटी होती है। ओके दिस सर्टिफिकेट सिक्योर सर्टिफिकेट वैलिडिटी, नाउ चेक दिस, ये सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होने वाला है? 1 ईयर होती है सर वैलिडिटी। It will expire on the 6th of 6 December December 2023. 2023. ओके इसको रिन्यू करना ये आपका काम होता है। इफ यू आर एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी लोड बैलेंसर इंजीनियर, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको सिर्फ नेटवर्क आता है, फायरवॉल आता है, आप ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन काफी मजा आता है करने में भी। मतलब F5 के फंक्शनलिटी बता रहा हूँ क्या है। सेकेंड थिंग, मैं GTM की बात कर रहा था। इफ आई आपको अगर कोई भी वेबसाइट का IP है, ये चेक करना है अगर उसको इसका करस्पॉन्डिंग IP क्या है, लुकअप कहाँ पे करता है, ठीक है, आप ये साइट पे जा सकते हो, DNS चेकर पे जा सकते हो, एंड उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है ग्लोबली। मैं डालता हूँ fb.com। नाउ हियर यू सी द मैप, ग्लोबल मैप, ठीक है। आई विल जस्ट डू सर्च,
You see this check? Okay, ये चेक का मतलब क्या है कि ये जो facebook.com साइट है ये पूरे ग्लोबल में मल्टीपल आईपी रिजॉल्व करती है। देखो इनके आईपीज है, करस्पॉन्डिंग आईपीज है, एंड दे कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। पूरे इंटरनेट को पता है कि facebook.com क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये facebook.com ये जो है और इसका जो ए रिकॉर्ड है, यहाँ पे हम डीएनएस बोलते हैं नॉर्मली, डीएनएस का एक रिकॉर्ड होता है। ये बाइंडिंग कहाँ पे होती है कि facebook.com का ये आईपी, ये बाइंडिंग कहाँ होती है? गॉट माय क्वेश्चन? देखो कहीं ना कहीं तो आपके नेटवर्क में अगर फेसबुक है, फेसबुक का जो डेटा सेंटर है वहाँ कोई तो सर्वर होगा ना जो facebook.com को इससे बाइंड करता है आईपी को। तो बाइंडिंग कहाँ पे होती है? डीएनएस सर्वर। आजकल ये चीज भी मॉडिफाई हो चुकी है। आपने डीएनएस बोला सही है, लेकिन आजकल ये कहाँ होता है? इन्फो ब्लॉक्स। आजकल ये होता है जीटीएम पे। अच्छा, इन्फो ब्लॉक्स भी नहीं, है, लेकिन मोर एडवांस इट्स अ GTM. Okay, so there are so many technologies that are there. You can have multiple concepts. Okay, now what is the criteria? See, एक चीज क्लियरली बोलूंगा, you should be minimum graduate. BSc हो, MSc हो, BCom हो, BA हो चलेगा, इंजीनियरिंग हो वेरी गुड, MTech हो वेरी गुड, डिप्लोमा में चल जाता है। ओके, आपने जेटकिंग का नाम सुना होगा? जेटकिंग का नाम सुना होगा? जेटकिंग क्या करता है? 10वीं फेल 12वीं फेल को भी ये सब कोर्स करवा देता है और बोलता है कि आपको जॉब मिल जाएगा, हमारी गारंटी। ओके, Yes, sir. Both. इट्स मेकिंग अ फूल। जेटकिंग बेवकूफ बनाता है। पहले बोल दिया है इफ यू आर अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, देन यू आर एलिजिबल। क्यों? अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करेगी। आपका सारा जो नेटवर्किंग सिक्योरिटी नॉलेज है ना वो साइड में हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो इफ यू आर ग्रेजुएट और इफ यू आर इन द थर्ड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, इफ यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, लेकिन आप चल रहे, आपका पढ़ाई चल रहा है, राइट, दैट मैटर, क्योंकि आपको पता है आप 1 साल में 2 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद आप ये सब कर सकते हो। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, मतलब कोर्स के कंटेंट्स होते हैं। ओके, अभी आपको तो सिर्फ नाम ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज को समझने के लिए इट विल टेक a lecture of around 4 to 5 hours. If you want to understand what is a spanning tree protocol, this one, spanning tree protocol, it will take minimum 3 lectures, around 7 to 8 hours. These routing protocols can consume 18 to 20 days or even a month. So there are IP addressing, VLANs, inter-VLAN routing, Ether channels, so many technical terms, netting, wireless fundamentals that we normally cover in the internet. These are the main points. Okay, there are so many points, hundreds of topics are there, but I'm just listing few of them. Automation. आपने सुना होगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में तो आजकल कोई आपको लैंग्वेज पता है ऑटोमेशन में? आपने अगर सुना होगा ऑटोमेशन कि में पाइथन यूज करते हैं सर। पाइथन है, लेकिन आज क्लाउड ऑटोमेशन भी चल रहा है। क्लाउड YAML भी ऑटोमेशन है। किसमें होता है? क्लाउड ऑटोमेशन किसमें होता है? टेराफॉर्म सुना है? टेराफॉर्म? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। ओके, इफ यू आर वर्किंग एट द अजूर क्लाउड, AWS क्लाउड, GCP क्लाउड, क्लाउड को भी उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है। यू हैव टू रन अ स्क्रिप्ट, ऑटोमेशन का एक स्क्रिप्ट होता है टेराफॉर्म। इफ यू गो फॉर द टेराफॉर्म साइट्स, it will list all the possible vendors. Okay, I will just show you. मतलब पहले तो आपको मैनुअल करना था, ठीक है? Okay, it's a HashiCorp company है. It provides you all the providers of the cloud. If anyone is already working in the company, okay, and wanted to learn in the automation part, you have everything here in the cloud. You want Azure, you will get Azure. You want AWS, you want AWS. Whatever you want, okay, you can configure from this Terraform. It is the most running current technology और सबसे ज़्यादा demanding technology है. Azure, you can configure Azure portal
or through Terraform, but Terraform is preferred. Why Terraform is preferred? वो एक अलग discussion है. Okay, if anyone is interested, you can see this. Amazon Web Services, Azure, Terraform Cloud, Google Cloud Platform, everything is supported by Terraform. So technology is so rapidly changing कि भाई हम पीछे नहीं रह सकते. If you want to survive, if you are not working, if you want seeking a network security job, आपके सामने challenges बहुत है. अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ starting से. Then you have so many topics. Security we already discussed. HA redundancy. High redundancy means what? If one of the router goes down. Okay, for example, see this scenario. If this router goes down, core network, the traffic will be moved via the other router. If this aggregation network, this device goes down, the traffic will be forward through this. So how these are configured? कैसे configure किया जाता है ये सब? कैसे सब बनाया जाता है? सर ये फोटो तो स्विच की है. L3, L3A, layer 3. Layer 3 means what? Routing plus switching. Okay, it is the aggregation layer. You have the L3 switch. L3 switch means उसमें routing और I switching know, दोनों का MLS. उसमें ये हो सकता है, right? Like that. Same thing is for that. अभी ये example ले लो. यहाँ पे मैंने जैसे कि single firewall दिखा है. ये firewall down हो गया तो पूरा network isolate हो जाएगा. So you have two physical firewalls which are configured as a single unit to handle the traffic. If one goes down, traffic can still be forwarded. कैसे करते हैं? बहुत सारे सब आता चीज आती है वहाँ पे. VPNs, MPLS, multicasting, route filters, so many technical terms are there. You will be learned. Okay, it's a very big course to study. इसमें कैरियर बनाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ाई किया आपको कल जॉब मिल जाएगा. ऐसा भी नहीं होता है. फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा. आपको पढ़ते पढ़ते कम से कम 4 से 6 महीने लग जाएंगे. उसको समझना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, लैब्स करना है, इंटरव्यूज क्रैक करना है. लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा. ओके, सर्टिफिकेशन आपको करना है तो आप CCNA अगर सिस्को में करना चाहते हो, CCNA है, CCNP, CCI है. उसमें राउटिंग करना है, स्विचिंग करना है, डाटा सेंटर करना है. बहुत यू कैन गो टू द सिस्को साइट एंड चेक द डिटेल्स. Checkpoint you have CCSA, Azure you have AZ700. Okay, if you go to Azure site, Azure certification, there are so many certifications की समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. थोड़ा स्लो है. ठीक है. And career growth, you can go from L1, L2, L3, L4, network architecture, sky is the limit. पूरा कैरियर इसमें निकल जाता है होते होते. Okay, now we are ready for the Q&A section. Any queries? सर ये जो आप जॉब के पोस्टर दिखा रहे थे ये जॉब सभी अवेलेबल है? वो मेरे नौकरी प्रोफाइल में था. Okay, if you have any kind of profile created in the naukri.com, you mention all your skills, CV अपलोड कीजिए वहां पे. महीना भर में देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट के लिए कैसे कैसे मेल्स आते हैं. ओके, अगर आपको समझना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, आई होप हर एक ने naukri.com फुल अपना अकाउंट बना के रखा होगा. हर हफ्ते आप अपना उसमें स्किल्स को अपडेट कीजिए. ऐसा भी होता है अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपको कुछ उसमें न पॉपअप्स आते हैं न कुछ मैसेज आता, कुछ नहीं आता है. तो आपको हमेशा उसको अपडेट रखना है और सी व्हाट टेक्नोलॉजी इज करंटली इन डिमांड. कौन सा प्लेटफॉर्म डिमांड में है, कौन सा क्लाउड डिमांड में है, कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं, कितना सैलरी पैकेज प्रोवाइड करते हैं. So one thing is I will mention that मेरे कुछ students थे पहले के, they were in the Geo and they were having experience of 10 years, but the package was only 5 lakhs. Now since last 2 years they are working in the data center, network and security.
their package is around 14 lakh within 2 years. क्यों? जब उनने स्विच किया, उनने टेलीकॉम से जब स्विच किया फ्रॉम 5 लाख, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में मिनिमम तो 8 से 9 लाख मिलता है अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो. ओके, ही चेंज हिज जॉब ट्वाइस, 2 स्विच में पहुंच गया 14 तक. लेकिन मेहनत भी लिया उसने, बंदे ने मेहनत भी लिया. देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स फ्रॉम द जियो. सो आई आस्क्ड देम कि तुम्हारा प्रोफाइल क्या था जियो में? वो बोलते कुछ नहीं, वो फील्ड पे भागना पड़ता है, टावर पे चढ़ना पड़ता है, केबल लगाना पड़ता है, राउटर लगाना पड़ता है, रिमोट देना पड़ता है, कहीं पे फ्लड आ गया तो नाव में बैठ के डीजल भरना पड़ता है उसके अंदर. ऐसे काम कर रहे थे. नाउ दे आर वर्किंग एज L3 नेटवर्क सपोर्ट. ओके, एनी क्वेश्चंस? सर इसमें डिग्री का कंपलसरी है? यू मीन टू से जहाँ तक एजुकेशन? हाँ, डिग्री मतलब कि बीटेक डिग्री, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा नहीं क्या, अधिकतर सब डिग्री मांगता है. एनी ग्रेजुएट, देखो मैंने वहाँ पे लिखा भी है हम्म, एनी ग्रेजुएट. मैं कैसा फेक कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ. कहाँ गया? Hi, how are you? Hello? Hi, can you hear me? yeah sir. Yeah, Abdul, I'm hearing you. Any Okay, graduate, Yes, sir. whether you are BSc, Sorry. MSc, BTech, B, but you should be a graduate minimum. बहुत अच्छा. जगह डिप्लोमा भी चल जाता है. ओके, डिप्लोमा वाले Yeah, diploma is also eligible for L1. L1. Okay, sir. After the learning, you can move on L2, no issue. I will say that for any entry point, whether you are B, BTech, B, BSc, MSc or anything, you have to enter as L1 only. Okay. If you are a fresher, if you are experienced, then depends upon your knowledge, your skills, certifications, and your hands-on experience, and how you crack the interview. ओके सर, आई एम 2 साल के एक्सपीरियंस है, वो भी टेलीकॉम सेक्टर में. Abhi, so what is your vision Hmm. now? Whether you want to switch your career or how is it? बस कैरियर स्विच, बस मेरे पास डिग्री नहीं है, वही डिप्लोमा है. Okay, I already mentioned diploma भी चलता है ना. Okay. So my major concern was if you are just a 12th or 10th, it will be difficult. Okay, अगर आप सिर्फ 10th और 12th तो थोड़ा difficult होगा. Diploma in that no problem. अभी for example, Infosys है, they normally ask for the engineering B students only. B पास आउट को कॉल देते Infosys. If you go for the Wipro, any graduate is eligible. If you go for the Capgemini, any graduate is eligible. So if you have any queries, okay, you can contact Brijesh. You have his contact numbers, okay. Any specific requirement, or if you are interested in any specific course, for example, you are already working as a network, but you want to upgrade to security, we can design that course. If you are a network and security, you want to go for the load balancer, we can design course. If you are just a college pass or don't know anything ABCD, we can design network security load balancer course. There can be so many combinations possible. So Brijesh, over to you. So guys, feel free to ask if any question from your side. This course is totally designed from with taking care of CCNA to advanced level CCNP and security. Those who are looking to make a career in networking domain while you are working on the telecom, struggling on field. Okay, mostly third-party companies or geo engineers. Those are not getting proper salary. Okay, experience around 10 years and the salary around 50%.
means 5 lakh less than 5 LPA. My recommendation is go for networking courses. It will make your life easy. Even you can enjoy on weekend as well. Who is from Geo? Akshay Dongra, I think you are on Geo. Sir, this is remote course or on in class? This is online module. Online. How much is the fees? Fee is total cost of this course duration is 6 months and complete module fee is 50,000. CCNA, CCNP, security. Security checkpoint and Cisco ASA. ASA and checkpoint. And daily session. What will be the class timing? Class timing daily Monday to Saturday evening 9 to 10. Okay. Actually, the major issue is I am working in Vodafone Idea currently in SNOC team, Okay. and I am working in rotational shifts. Actually, I am working in RAN department, and I am trying to switch in IP department for security or Guys, sorry anything to else. interrupt. I need to drop. Okay, I got some urgent call. So, Yes, Regis, I please. will drop. Okay, please take care of Yeah, this. yeah. Yeah, Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Yeah. Bye. Sir, will we get the recording? We'll share the recording. Give me next 2 hours. Team will download and share in the group. Okay, Meanwhile, you thank you. can discuss. Okay. Let's see in telecom. I personally seen. Okay, there is no future opportunity. Okay, a fresher get replaced experienced candidate. Right, same. I am discussing that. I am working from last 4 to 5 years, and I am same working in RAN department. And I don't think Okay. there is so many growth in RAN department or RAN team. Actually, RAN is not so good for as for BTech person as well. Yeah, the BTech person working in the telecom, they are spoiling on life. Okay, in 5 to 10 years after long experience, candidate are not happy and some physical thickness and lots of things are happened. Okay, you know, in most of the position are off role. Okay, guys, just Right. give me 1 minute. Okay, sir. Most of the position is off role. Okay, if the candidate working on field, they are just changing the hardware. Some candidate are just working on tower side, changing the azimuth, or some candidate are moving around, taking the handsets, moving around road the road. I'm right or wrong? Right. Very risky job as well. No. So Right, sir. Right, sir. this course will take some time. Okay. This course will take some time and need your effort, because if you are not putting your effort, you will again zero. So this Sir, is the final round, I think. Sir, I have a few questions. Yes, please. So in the presentation, he was showing load balancers F5, A10, but in the course, are there any load balancer training included, or is it separate, or what is the deal with that? One load balancer will be part of training. Actually, I designed this course CCNA, CCNP, security as per market trend. Okay. So, sir, market trend, the checkpoint firewall is not that much in the market trend. Actually, I think more in trend are either More Palo in Alto trend, or Palo Alto is there, ASA is there, but in old network, yeah, there is a or Cisco Firepower, yes. So FMC. whatever in market, in opening based on module. Also, we added the Azure cloud based learning, because you know in cloud the networking is traditional networking is required. Also, sir, there is one more question I have. So Yes. this course will be 100% in English, right? Yes, Because mostly the 100% is English.
Or Because the technical language we presentation, can the no, because the presentation was like 75% Hindi and 25% English. So if people don't understand Hindi, it will be difficult for them to go through the course. I try to explain both the language because the only audience not English language candidate. Okay, maybe some Hindi candidate also. We'll try to converse in both the language. And technical thing is easy to understand because if I am talking about the router, we'll always take name router. Will not go for Hindi names. Okay. If I am going to BGP, OSPF, ISIS, it's just a technical learning. Nothing worried about this. And for this training, the laptop is mandatory. Minimum 8 GB configuration laptop is required. Okay, and how about the lab? What is the All lab based on our virtual setup. okay? It is assessed. In every candidate laptop will create the virtual machine. Okay. So whatever you do in a lab, also save, modify, rectify, whatever add or delete the notes we can do. And this course is designed for fully practical. The instructor will instruct you to do this thing, because it's a totally practical base. Okay, Any sir. other questions? One more question for the students, those who want to pay in any other currency. How do they pay? For other currency, around $1,000. So that will be more than 50,000 rupees, right? Yeah, but some candidate working in India getting salary 50,000. Some candidate are getting salary in US 3 lakh. Okay, so conversion is high. Some people are not even working. Those other candidate countries. will also help if not working. Even some fresher wants to take training will give some relaxation. As for whatever we are charging, suppose 50,000 for Indian, almost 10,000 extra will charge for outside of the candidate, because we have to pay GST and all, everything. Okay, so yeah. Okay, sir. Please, when you design or finalize the course, let us know in the group and go from there, because I'm not interested in doing checkpoint. I will rather do something different, like F5 load balancer or No problem. We if you know if you don't want to checkpoint, we'll add another thing. yeah, because checkpoint is not very popular. It is very complicated and it has a lot of problems. So not many people are implementing checkpoint. Most of the As people of are now, ASA and Palo Alto, they are following all the company as of now. But in older network, still checkpoint is there. And ASA is also end of life, so people are moving to FMC, FTD. ASA is a proprietary for Cisco, na? Yeah. So they are moving to firepower and FTD. Since you are in security, you know those. Yes. FTD 1120, 2120, 3120s, FMC. So I think that will add more value to the course rather than ASA. Okay, no problem. We'll add. This is just a suggestion, so you can Yes, come up with a good. Suggestion is always appreciated to add or modify whatever the candidate are looking in market. Okay.
Yeah, so when you finalize, you can put in the group and then we can go from there and the start date of the course. Yes, yes. Everything will mention on the chat. Any other question, Pragati? One Yes. more question. I have one last question. So this course that is going to start, it's ongoing courses, right? If we miss this particular course, we can always join the next one, right? Yes, yes, yes. This type of facility we have. Okay, yes, thank you. This is cyclic batch. Older candidate wants to revise the thing. If you miss, join and do without any extra charges. Okay. Any other courses, sir, other than CCNA, CCNP, or the networking combination that you are presenting here? Is there any other course? Yeah, this for networking, this is the overall course, and we No, have I many mean, courses. yeah. We have in protocol side 4G, 5G, 5G and ORAN, and SIP and IMS, including VoIP and Python automation. And you have VoIP like CCNP voice, something like that? Yes, like CCNP voice. Okay. And how much is the price for CCNP voice? CCNP voice for 50,000. Okay. That is just one CCNP voice, right? Or Yes, yes. anything And else included in including that? IMS is including, because What in is IMS in telecom they are using for voice communication in 4G and 5G as well. So okay? IMS is also part of SIP protocol. Okay. SIP is also part in used in VoIP and CUCM. Yeah, I know. Port Yes, yes, 5060. Port yes, yes, 5060 is yes, yeah, okay. yes, yes, Yeah. yes. It also long time. Even version is not changed around before 25 year. I think SIP is introduced in the network. Okay. Any other questions? No, that's it. That's it. Yeah, okay. Uh, If I have another question, I will hit you on your phone. Yes, yes, please. Yes, good day. I just want to know the course fee. Does that include certification cost? Certification fee is different. We are the charges for only the training. Certification charges for CCNA around $250 USD, I think. I done in last 13 or 14 year back. So around 18 or 20,000 as per Indian rupees. So maybe this Okay. time also 250, 100. But you know, in certification is no more required. The skill is only matter as of now. Yes, minimum you have CCNA certification is required to go in this domain. Not required to many certifications, CCNP or yeah. It's a depend company to company. Yeah, yeah. But my other question is, let's say I do the course. If I'm to attempt to do a certification, how do I do the certification? Do I have to attend a testing center, especially for people who are not in India? I know the center in India. Okay. In every metro city, the center is there, and they are the candidate who will help in passing the certification as well. Okay. Okay. Yeah. I'm referring because myself, I'm not in India. You see. I'm actually in South Africa. So I got this Okay. one linked So in. check with the Benin, Tanzania, or some other region. Okay. Yeah. Any other question, guys, from your side? Otherwise, we'll close the call. I hope you enjoyed today's session. It will help to where you have to go. Yeah, Nabil.
I think no question. Thanks to all for joining with us. Thank you.